गोटे बाहर करते चलो गोटे तो सुविधा गोटे रख खोलिए खोलिए देंगे और गोटे पेज में इम्पोर्टेंट पूरा पीडीएफ सीटा आसो ठीक अच्छे सीनियर फीचर्स का बना এটা को ये सब पेजेस ऐड कर दो मोटा से ही कोई इतना कि जो एटा सेलियंट फीचर्स टा पड़े अभी एटा इतना इंपोर्टेंट होय कि जेई देबी तो सेही गुटे भी होने चल कुछ असुविधा ओके बस नेक्स्ट करो और लिखो स्टाइलस इधर এটা অন আছে অলরেডি হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ রাইট थिकनेस इनका चूज करते हैं हाँ ठीक है कलर्स ओके ठीक है ठीक है इन्वेस्टमेंट का इरेज बस यही दीटा तो फंक्शन चाहो किसी तो नहीं बस है ना बेसिक्स ये जाओ तो दरकार जा पाई तो नेक्स्ट नेक्स्ट କରିବା डायरेक्ट जे ଯିବାର ओके ओके थैंक यू स्टार्ट करो अच्छा এটা শো করলে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ স্টার্ট করো Hi, good evening. Today we'll be dealing with the salient features of the Indian Constitution. First of all, features जानिया आगुरु हमें we have to understand what is the Constitution. तो Constitution विषय रे कौन कौन किए जानी चाहती किसी आइडिया है अच्छा नहीं इटा ऑन स्पुट चलो ओह अच्छा अच्छा ओके सर so Constitution कौन है पान ता लगे उसी एमिति क्या पान ता लगे अच्छा एमिति Oh, without it. Okay, sorry, sorry. Next. ठीक है हाँ 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 ओके सॉरी
हाँ हाँ सो कॉन्स्टिट्यूशन टा आगे बुझिया इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट जोटा है हमारा salient features constitution most important it has most important thing that it does is it sets law sorry it sets the basic rules and regulations by which a country is to be governed. Is to be governed. That is the primary function of the constitution. It sets the basic rules and regulations by which a country is to be governed. Okay, that is one aspect. Second aspect, it establishes the basic or fundamental organs of the state. Now, state will deal properly under Article 12, but to give you a basic idea, Article 12 that deals with the state refers to the government and its agencies like the executive, legislature, judiciary, and its agencies that fall under the purview of the definition of state. Okay, so it establishes the basic or fundamental organs of the state. Now, you have to understand ଆମର basic organs गुड़ा किए तो हमारा legislature, executive and judiciary. Okay, these are the three fundamental organs of the state. Legislature is tasked with making laws. Legislature हमारा दी type ର legislature अछि. गोटे हेला center रे which is represented by the Parliament of India. Then you have legislature in the states which is represented by the state legislatures or Vidhan Sabha. Okay. So tanko kamota main kono laws banaiba. Okay. Then we come to executive. What is the work of the executive? Implementation. Law bana heigala. Law bitare law ର ଗୋଟେ framework ବନିଗଲା ତମେ ଗୋଟେ ଭାବ ଗୋଟେ human body is what a skeleton and flesh. Now the skeleton is the framework of the human body, so the skeleton is made by the legislature. Okay, executive जो laws गुड़ा legislature बनेइला ताकू पुनी on ground implement भी तो करियार अछि ताकू खाली तो law form रे हमें पढ़ी दबानी ताकू implement करिया पई तो बनाउ छु। Now body भीतर भाव बनै देला skeleton के बनै देला legislature. Executive infuses blood and flesh in that skeleton. Human केतोळे बनिबो. So implementation is done by the executive organ of the state. Executive को जेंति legislature represent करे center रे parliament और state से state legislative assembly. Similarly executive को की represent करे center रे? It is the prime minister and his council of ministers. You can include the president also. Okay, prime minister and the council of ministers plus the president. Similarly state रे की होबो एटा गोटे हिंट दे देली exactly cm हैला तो cm and his council of ministers plus the president governor. Yes, very good. Okay, this is a basic about executive. Now you have the judiciary. Judiciary काम कौन ये law बनेला legislature गला ता पाखु implementation by executive implements the laws. Then you have interpretation. Okay, interpretation माने जो laws बनिला जो law legislature रे बनिला तापर executive implement कला whether they are in harmony with the constitution है ना
तुमको देखिया को पड़िबो ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द रोल्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इन अ वेरी कोहेरेंट मैनर तुमरो लेजिस्लेचर आगे इनिशियल कोड होला स्टार्ट कोड इनिशिएट होला लेजिस्लेचर लॉ बनना लॉ टा ता अप्रूवल सॉरी ता लॉ टा को इंप्लीमेंट किए करिवो एग्जीक्यूटिव नाउ ए जो लॉ टा बनिला इस स्टेज रे एंड एग्जीक्यूटिव रे stage re joti implementation hela now we have to ensure that it is in harmony or in consonance with the provisions of the constitution because constitution is the supreme law of the land. Okay, why is it called the supreme law of the land? Because all laws in the country, IPC ho IPC though of course it has been replaced by the Bharatiya Nyaya Samhita, all these laws, whatever laws that we have in our country, they derive their legitimacy from the Constitution of India. है तांकर जो ये माने जो लेजिटिमेसी क्रेडिबिलिटी कि से माने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल संगे अलाइन करूछंती सेटा किए दबो ताकू जो ताकर लेजिटिमेसी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन therefore all laws are subservient माने सबु laws have to align with the principles of the constitution. Okay, so hence it is known as the supreme law of the land. So therefore this supreme law of the land has defined this arrangement where the legislative makes laws, executive implements laws and the judiciary interprets the laws ki law bada constitution sangare match hochi ki nahi the principle sangare aligned he ki achi hala. This is one aspect. Okay, constitutional data aspect dekhiye. And what is the third aspect? Third is it defines the interrelationship, defines the interrelationship between different organs. organ established तो हेगला ता फंक्शन भी हमें जानी गले बट आंको भितर किछि रिलेशंस भी अछि ना जेमति लेजिस्लेचर तमे आमे देंचु when we आमे आगु जेतले पढिबा जेत पार्लियामेंट ओ डिटेल ले पढिबा you will come across an important article 75. What does article 75 talk about? Okay, idea is article 75 what a fundamental principle of democracy lay down करे कौन lay down करे the council of ministers is collectively मन पड़छ किछ is collectively responsible to the house of people or what is it house of people कौन बोलती लोकसभा हाउस ऑफ पीपल पार्लियामेंट रे हमर दीटा चेंबर्स अछि टोटल हाउस ऑफ पीपल नोन एज दी लोकसभा हाउस ऑफ स्टेट्स नोन एज दी राज्यसभा ओके सो हाउस ऑफ पीपल इज द लोकसभा काहे ना लोकसभा रे डायरेक्ट ये होछि ना इलेक्शंस होछि आमे जो हमरा एकरा जो 2024 जो इलेक्शन कला ओडिसा रे दीटा इलेक्शन हैला गोटे थिला हमर स्टेट इलेक्शंस जोतरे BJP GTK, they formed the government. Mohan Maji became the chief minister. Then we had the general elections. Now, general elections ta kono? This election is held. This election is held to elect members to the Lok Sabha. Lok Sabha is the house of the people. Law ta jetale bonne आमर पार्लियामेंट रे सेंट्रल आमर बहु सब तीनटा सब्जेक्ट्स अछि एटा सब इंटर रिलेटेड जिंस हैला तीनटा सब्जेक्ट्स अछि आमर तीनटा लिस्ट्स अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट सुनिथियो समस्त सो यूनियन लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स गुडा अछि द ability the competence to make laws on those subjects किए लॉ बनै परियो यूनियन लिस्ट ऊपर यूनियन लेजिस्लेचर मु काउंट कहली आगे लॉ बनेरा का पर पावर ना बाउंसर जाउची तो बेसी ये जाउनी तो आउतरे बुझेबी किछि बुझी पड़छ समस्त बेसिक हमें आगे बुझिले लेजिस्लेचर काम ना लॉ बने हला दी टाइप रो लेजिस्लेचर अछि गोटे सेंट्रल लेवल ले हला पार्लियामेंट आ गोटे स्टेट लेवल ले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ सेंट्रल लेवल जो पार्लियामेंट अछि यूनियन लेजिस्लेचर को ऊपर लॉज बने परियो तो ऊपर क्वेश्चन आसीबो
कि यूनियन लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट कहा ऊपर लॉ बनै परिबे तो कहा ऊपर लॉ बनै परिबे इट कैन मेक लॉज ओनली ऑन सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द sorry which are mentioned in the union list है then you have the state list जेमिति यूनियन लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि सब्जेक्ट्स जेमिति कोन हे गला तमर सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस है करेंसी एटसेट्रा these are all union subjects है एगुडा सब यूनियन आ ऊपर खाली लॉ किए बनै परिबो ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केबे देखिछ हमर एठी विधानसभा रे केबे डिफेंस ऊपर लॉ बनिछ है so it is the prerogative or it is the right of the union list to make laws mentioned in the sorry it is the prerogative of the union mane parliament to make laws on the subjects which are mentioned in the union list है similarly state list रे कोन land law and order है these are examples of state subjects land ऊपर हे गला एग्रीकल्चर हे गला लॉ एंड ऑर्डर हे गला आ ऊपर लॉ की बनी परिबो स्टेट बने तमर गोटे माइंड रे आसु अरे 2020 रे पार्लियामेंट गोटे लॉ बनैतिला एग्रीकल्चर फार्मर्स लॉ बनैतिला सेटा केमति बनैतिले दे कैन मेक लॉज बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट केना सेटा स्टेट सब्जेक्ट ना स्टेट कहबो एटा हम सब्जेक्ट तमे केमति लॉ बनै दी परिबो लॉ ए माने बनै परिबे but it is not binding on the state list there are certain exceptions where the union can make laws on state subjects but सेटा हमें आ गोटे चैप्टर रे डिस्कस कर हमें खाली बेसिक जिंस गुडा देखुछु कॉन्स्टिट्यूशन है सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम जिंस हमें देखिले कि इट सेट्स द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेकंड तमर कोड गला जो हां इट एस्टैब्लिशेस द देखि दिया नंबरिंग कर दी establishes the basic or fundamental organs of the state जोटा हमें देखिले executive legislature judiciary then third जिनसे हमें कौन देखिले it defines the interrelationship between different organs अच्छा एटा मु कहउतली मु से कहली एटा कहियार मानेटा एटा interrelationship माने हमें तीनटा organs देखिले तांको भीतर relation केमति रहउछ आम constitution has been drafted in such a manner where there is separation of powers on one hand but there is no true separation of powers काई separation of powers माने कोन legislature को ता कामटा दिया हिच वर्ड रो बुझो किछि बसिया दरकार legislature काम दिया हिच ता पावर टे कोन दिया हिच मेकिंग लॉस executive रो काम कोन दिया हिच implementation आ judiciary काम कोन हिच interpretation देखि constitution सा रोज के एटा हला तक separation of powers but there are situations where legislature keeps a check on the executive judiciary गोटे चेक रखिबो सॉरी लेजिस्लेचर गोटे चेक रखिबो जुडिशियरी ऊपर वैसे वर्षा जुडिशियरी गोटे लेजिस्लेचर ऊपर भी चेक रखिबो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव ऊपर भी चेक रखिबो तम भाबो गोटे क्लास अछि हला तमरो क्लास रे तमरो दीटा टीचर अछन हला तमे आ गोटे प्रिंसिपल अछि नाउ जे टीचर धर को मु तम माने स्टूडेंट्स अछ समस्त तो स्टूडेंट्स ऊपर मोर कोन मु डेली तम क्लास पढाय पे आसी मु तुमको समस्त गोटे क्लास वर्क देली नेक्स्ट क्लास रे आई एक्सपेक्ट कि तुम सेटा करि के आस्थिबो होमवर्क टाइप रे देली तुम आई एक्सपेक्ट तुम करि के आस्थिबो तुम नेक्स्ट क्लास रे कलनी सेटा जे कला ठीक अछि बट जे न कला ताको ऑब्वियसली आई विल स्कोल्ड मु कहबी भाई काई कलनी तुम कोन पे कलनी एटा तुम अफेक्ट करिवो तुम मार्क्स मु आई केप्ट अ चेक ऑन द स्टूडेंट्स नाउ एथर मु क्लास रे कोन हेली मु तुम जो होमवर्क देली जो पिला कलेनी मु तो छिडा कली ह्यूमिलिएट कली मु कहली कोन पे करूना तमे एटी लायक नुहे तमे आसियारो कोन पे एटी क्लास आसो जाओ एटू तमे मो क्लास रे आसीबो नाउ दिस इज टू हार्श से पिलाटा ऑब्वियसली ह्यूमिलिएट हला समस्त सामने ताको खराब लागिला से जाई कि प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर को कहला प्रिंसिपल सर देखो तो मु आजिटा मोर गोटे रीजन दिला बट सर बुझिलेनी मु सर मु कहिली कि सर बुझिलेनी एमिति कहिले मते बहुत खराब लागिला सर कोन मु करिबो सो प्रिंसिपल मते डाकिबे रूम को कहबे सेमिति दैट वाज नॉट जस्टिफाइड तमे से स्टूडेंट संग सेमिति कथा हबा कथा नै जहा बिले स्टूडेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि तांकर किछि हेई पारे तांकर किछि दरकार ये थई पारे एक्सक्यूज थई पारे कोन सेई दिन कोन प्रॉब्लम हेई यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग सो इथरे कोन हैला तमे बुझिलो
now I was the legislature है ना sorry legislature ना students तम ऊपर check मु रखिली I am executive मु तम ऊपर check रखिली now judiciary is the principal judiciary मो ऊपर check रख so ए जो system टा अछि this system is known as this doctrine of checks and balances गोटे organ को इतने power दिया ही जाएगी कि से सर्वस्व ही जाए that is not the case that is not how our constitution has been designed okay सेहित पई तमे देखिबो जो लॉ टा बनिबो एग्जीक्यूटिव जोटा लॉ टा इंप्लीमेंट करिवो ताको जुडिशियरी थ्रू चेक करिया को पड़िबो जुडिशियरी तो चेक करिवो एटा जदि ठीक अछि जदि एटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल संगरे वैलिड अछि हार्मनी रे अछि then only that law will be accepted बुझि पाले कि तो जुडिशियरी कीप्स अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव okay legislature keeps a check on the executive how ना legislature तमे एटा हम जो पढ़ले article 75 the council of ministers is collectively responsible to the house of people माने council of ministers and the prime minister मन इच्छा करि परिबेनी से माने जवाब देही का को जवाब देही to the house of people or the lok sabha तांको आमे इलेक्ट करछु तो नेचुरली आमे तो इलेक्ट काई करछु आमे जो हमरो अछंती भुवनेश्वर रु अपराजिता षडंगी आमे तो काई इलेक्ट करछु कि तमे भुवनेश्वर रो कथा उठैबो कोठी पार्लियामेंट आमो बिहाफ रे आमर तो एटा ऑब्वियसली फिजिबल नुए ना आमे कोटी कोटी लोक आमे समस्त एई पार्लियामेंट लॉ तो बनी परिबे सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली आमे इलेक्ट कलु कि देखो अपराजिता षडंगी आमे तम ऊपरे मैडम आमे तम ऊपरे वी रिपोज आवर फेथ तमे आमो बिहाफ रे भुवनेश्वर रो कथा जाई कि पार्लियामेंट रे उठा हगी ना एटा तो बुझिचो एटा जिंसटा सो जेतबळे सीए जेतबळे सपोज ही बिकम्स अ मिनिस्टर टुमारो सी मन इच्छा काम करि परिबो ताकू लेजिस्लेचर थ्रू इट्स वेरियस डिवाइसेस दे विल क्वेश्चन हर कि कौन काम हेछि क्वेश्चन आर रे ऑपोजिशन रो लोक उठी की पचारिबे कि बीजेपी गवर्नमेंट रो भी लोक के जदी जे इंटरेस्टेड थिबो इंडिपेंडेंट मेंबर ताकू क्वेश्चन करि परिबो अपराजिता मैडम मते कोंतु भुवनेश्वर रे केते डेवलपमेंटल वर्क हैला जो गोटे तुम रिंग रोड बनार था गोटे एग्जांपल दउछ खाली गोटे रिंग रोड बनार था केते तार ये हैला केते दूर गला से जिंस भुवनेश्वर पई एथर केते एलोकेशन हेछि फ्रॉम द स्टेट बजट व्हाट आर दी प्रोजेक्ट्स दैट वर लैगिंग माने जोड़ा ये रे थिला लैग करथुला जोड़ा हेई नथिला प्रीवियस गवर्नमेंट अंडर सेटा केते तार माने केते प्रोसीड कला से जिंसटा एटसेट्रा हैला so this way the legislature keeps a check on the executive again so this checks and balances system is defined by the constitution say by it defines the interrelationship between different organs तीन सब organ भीतर relationship बतैली मु केमिति किए काकू चेक करे तीनटा जिंस हे गला हैला एटा रब करछु मु ओके स्पेस पे सॉरी हैला ओके ये सरला हमर now we come to the fourth aspect fourth टा कोन relationship between different organs he gala now it also defines the relationship between the citizens and the state हैला एटा तो डिफरेंट organs किंतु तमे जो जिंस गडा करूछ लॉ बनेइबा लॉ को इंप्लीमेंट करिबा लॉज को इंटरप्रेट करिया का पई गोटे थिबो तो ना कि आमो पई citizens so it is important कि citizens our government which is represented the state which the government which represents केबे घोषिबोनी जहा पड़िबो सेटा सब बडे वर्ड को ब्रेक डाउन करिवो हला तमे खाइया एतले खाउछ सेटा कोन होछ तमे को एकात्रे खाइ दउछ जदि एकात्रे भी खाइ दबो सेटा ठीक रे
ये हम डाइजेस्ट हम तुम कौन कर च्यू कर छोट 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 बाइट्स करके रखुच से तो कौन कर बॉडी से बाइट्स को ताठू न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर तो सिमिलरली जो तुम गोटे को भी गोटे नुआ टॉपिक कि गोटे नुआ कांसेप्ट देखिबो always try to break down the words social contract घोषिया दरकार नहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट माने बुझ अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल तमे भाबो गोटे तमे किनिलो इंश्योरेंस टे किनिलो हेल्थ इंश्योरेंस है ना यू परचेज द हेल्थ इंश्योरेंस नाउ एचआई लिखि दउची हेल्थ इंश्योरेंस है ना नाउ यू आर एक्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर सपोज तमरो ये हे गला धर को वो भी गोटे हेल्थ इंश्योरेंस दे को कंपनी गोटे रिलायंस हे गला रिलायंस है ना रिलायंस कौन सा ना अर्गो रिलायंस अर्गो ना कौन ने से एचडीएफसी और रिलायंस रो तमे हे गला है ना गोटे एग्जांपल कर रिलायंस तुमको कोन कहला आमे तुमको हेल्थ इंश्योरेंस दबो फॉर दिस मच रुपीस है ना रुपीस धर को 50,000 एति की प्रीमियम आमे नबु तुमको है ना एक्स कहला ओके ठीक अछि किंतु अग्रीमेंट रे कोन थिला अग्रीमेंट रे कहला कि आमे हमर हेल्थ कवरेज खाली ए बी सी पाई है ना तमरो डायबिटीज डीटा डी फॉर डायबिटीज लिख दो डायबिटीज ता कवर्ड नाही है ना नाउ ए लोकटा को डायबिटीज हे गला से करि परिबो कि आठू क्लेम करि परिबो काई करि परिबो एना ऑलरेडी तमरो जो अग्रीमेंट थिला ता अंडर तमरो ऑब्लिगेशन कोन कि यू आर कवर्ड अंडर ओनली ए बी सी डिजीजेस नॉट डी डी इज डायबिटीज तुमको डायबिटीज ता हैला तो नेचुरली एटा कवरेज दबनी हो कि ना तो सिमिलरली हमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी सेया तमरो जतो बडे सोशल कॉन्ट्रैक्ट रे हमर कोन होची एटा हैला सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जोटा भी तो लिखि परिबो on one hand you have the state mane government and its agencies on one hand you have the citizens है ना कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे कोन ये होची स्टेट कहला कि तमे जति सिटीजन्स आमको जति रिस्पेक्ट करिवो आमको जति ओबे माने आमको ओबे माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तापर ए जो जति की नेशनल सिंबल्स आउ जदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिबो देन इन एक्सचेंज आमे तुमको कोन दबु तुमको आमे दबु फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हला तुमको राइट्स दबु आ तुम सिटीजनशिप मिलिबो तुम सिटीजन्स कहले ठीक अछि आमे सेटा करिबु स्टेट कहले तमर खाली एति की जिंस नवे यू आल्सो हैव टू obey some fundamental duties you also have to follow some fundamental duties so eta gote give and take relationship jemti agreement gote give and take relationship tome kono paisa delo si tumu health insurance dela tome agree kolo ki na na ei disease goda covered nai se sei hisab re तुमको तारा माने ये सेट कला कौन सेटा जो जो कौन सा कोई ए जो प्रीमियम 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 टा से तुमको ये कला हैला सो सेमिति एग्जैक्टली गोटे कॉन्ट्रैक्ट हेची कहा भितरे गवर्नमेंट भितरे और सिटीजन्स भितरे एटा गोटे फिलोसॉफिकल कांसेप्ट एटा रियल ले की गवर्नमेंट साइन करनी हमसे एग्रीमेंट एटा फिलोसॉफिकल कांसेप्ट स्टेट कोन कला सिटीजन्स को कहला कि देखो आमे तुमको सिटीजन रो मान्यता दबु और फंडामेंटल राइट्स रो और तुमको राइट्स भी तुम प्रोवाइड करियो बट इन ऑर्डर माने इन ऑर्डर टू एंजॉय दीस राइट्स you have to obey the fundamental duties laid down by the constitution and tamara kon you have to respect the national symbols so this give and take relation is the social contract so eta kiye define korchi it is defined by the constitution of India
It is the relationship between the citizens and the state. बुझीगल चार्टा इंपोर्टेंट जिनस कॉन्स्टिट्यूशन आमर मेजर जिनस आमे देखिदेले इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑल लॉज आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबु लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर जाए सेकेंड जिनस जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न द कंट्री केमिति गोटे कंट्री चलीबो कोनटा आम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हबो ऑल दिस इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड एस्पेक्ट आमे देखिले मेजर तीनटा जो ऑर्गन्स अछि हमर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी देखिले ता रोल्स गुडा कोन लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर रो एग्जीक्यूटिव रो इंप्लीमेंटेशन एंड जुडिशियल रो इंटरप्रिटेशन थर्ड एस्पेक्ट हमें देखिले जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सेटा हमें देखिले केमिति हाउ ईच ऑर्गन कीप्स अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ताका भीतर रिलेशनशिप केमिति वी सॉ दैट एंड लास्टली वी सॉ हाउ the constitution defines the relationship between the citizens and the state हैला किछि आउ डाउट्स कार तो एटा बुझिया इंपोर्टेंट एथ पई बिकॉज़ आमे नेक्स्ट पार्ट ता बुझिया पई वी हैव टू अंडरस्टैंड हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखिले जोटा व्हिच इज द टॉपिक ऑफ द क्लास टुडे एटा हला हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेत्ति की आमे सब देखिलु जो चारटा जिंस देखिले आमे हला कि डेफिनेटली माने बेसिक सेट्स द बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ हाउ टू गवर्न द कंट्री रिलेशनशिप बिटवीन different organs of the state establishment of organs of the state and relationship between citizens and the state all these are encapsulated in the features of the constitution एगुडा सबु constitution ने तांको articles form रे provided अछि हला now we look at some of the salient features of the constitution salient features माने पूरा important features of our constitution we start with the length of the constitution our constitution ta को बहुत lengthy कोन why do we call it lengthy right but what is the sorry correct absolutely correct correct okay very good so originally we had originally there were 395 articles and 8 schedules जेतले constitution first time बनी थिला 1950 रे तो adopt हैला 26 January 1950 को तो enforce हैला sorry 26 January को तो enforce हैला सेतबळे you had 395 articles and 8 schedules but currently we have as you said correctly we have more than 470 articles and 12 schedules very good hala 4 schedules were added over a period of time hala so prathama amar tame dekhucha the size of the constitution is huge we have a gargantuan constitution but bahut hi bada lengthy written constitution taku ame different reasons koi pariba what are the reasons for this length prathama hela your geographical factors hala now okay. First geographical factors hala first factor काई की एते बड़ा काई की लेंदी काई की geographical factors कोनटा आमर constitution is a single constitution आमर यूएस भलिया में कोन स्टेट में अलगा constitution country में अलगा constitution नहीं we have a single constitution now this single constitution caters to all the states the entire territory of India naturally तमरा एबडा ए पर्यंत तबे देखतुला 2019 बोते तो कश्मीर पे भी थिला से तोर तापे गोटे स्पेशल स्टेटस वाला जो आर्टिकल 370 थिला जोटा व्हिच ग्रांटेड अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर तो एथरो तमे देखि पड़छ स्टेट्स पई भी you had different provisions then you all the provisions apply to all the states of the country the entire territory of India so naturally the size bodo so one is your geographical factor jota because it caters to the entire territory of India है the constitution second historical factors कौन
तमे देखिबो हमर कॉन्स्टिट्यूशन हमें एटा कहबा भी एठी पुणी वेरियस सोर्सेस जतले हमें आसीबा नेक्स्ट पॉइंट को सेठी भी देखिबा कि जतबेले व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड we had different inspirations गोटे कोन ब्रिटिश इंस्पिरेशन आ गोटे अदर कॉन्स्टिट्यूशंस है ना आमे 200 वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रही तो नेचुरली तमे देखिबो जतबेले व्हेन यू रीड अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे कोन होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तमे देखिबो 17 तौड़ को आसे एमती पॉइंट ना सॉरी हाँ केमती करी अच्छा थैंक यू अच्छा एटा जो आमे जो ब्रिटिश रू नेलु आमे 200 इयर्स ब्रिटिश रूल अंडर थी 1773 रे रेगुलेटिंग एक्ट रू आरंभ हैला जोटा सेबेटू ब्रिटिश हैज बीन डिजाइनिंग लॉज फॉर द कंट्री है ना तमर तीनटा मेजर तो हिस्ट्री रे तुम पढ़ी दिबो तीनटा बैटल्स व्हिच डिसाइडेड द फेट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया जोटा हला तमरो प्लासी 1757 1761 was a battle of Wandiwash and 1764 was the battle of Buxna है ना three battles that solidified the British possessions in India, the British rule in India, जोटा ब्रिटिश को firmly कंसोल्ट में इंडिया रे सेटल करेगा तापर ब्रिटिश माने को भाबिले कहले माने एमिति कोन रहउछन इंडियंस माने हमको जदि हमको गवर्न करियर अछि वी हैव टू ड्राफ्ट सर्टेन लॉज तो रेगुलेटिंग एक्ट हे गला तापर तमर पिट्स इंडिया एक्ट हे गला हैला एटा कोन यूज करब हैला पिट्स इंडिया एक्ट हे गला पिट्स इंडिया एक्ट then your ये what about it Indian Councils Act sorry Indian Councils Charter Act पढ़िबो हम तळे सेटा पढ़िबा सेतळे हमें एटा को डिटेल ले पढ़िबो जस्ट एटा खाली तुम रेफरेंस पे कहू चार्टर एक्ट्स गुडा 1813 33 53 then you had the Government of India Act 1858 Indian Councils Act 1861 1909 1919 then you had the Government of India Act 1935 and finally Indian Independence Act 1947 post which our constitution was drafted in 1949 and enforced in 1950 okay एटा हमरो टोटल पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनला पर्यंत तो तमे देखो एठी केते इन्फ्लुएंस कहार रहउछ ब्रिटिश गवर्नमेंट एति की लॉज बनेला ता भितरु वेरियस प्रोविजंस वी हैव अडॉप्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे प्रथम थर फेडरलिज्म कथा हैला 19 ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कोन हैला तमरो बाइकैमरलिज्म जोटा आज हमें देखुछु राज्यसभा और लोकसभा बाइकैमरलिज्म कथा हैला so there were different provisions different features which were borrowed from the British rules and British laws है ना so therefore गोटे एस्पेक्ट हम एटा देखि देले ब्रिटिश को एति की जो एते एक्सटेंसिव लॉ मेकिंग थिला तांकर आ 200 वर्ष हमें तांकर अंडर रहिलु तो नेचुरली हमें तांको इंस्पायर्ड हबा तांको प्रेरित हबा सेटा गोटे नेचुरल जिंस आगे ना
So that was one aspect why it is lengthy. Eta हम historical factor पढ़छु मन रखतो हैला. Second जिंस कोन other constitutions जो हमें inspired ए various sources टा भी इतरे add कर दवा various sources हैला same जिंस. So we were inspired by different constitutions. तमरा Irish constitution नु नेइचो तमे कोन DPSPs हैला आउ को आउ एग्जांपल्स को मते आउ को क्वेश्चन वेरी गुड कौन सेठी ताकू डका जाए ताकू कौन कुआ जाए सेठी हमर एटी फंडामेंटल राइट्स ताकू होउचे ताकू कौन कुआ होउची बिल ऑफ राइट्स हैला हमर जंती एटी फंडामेंटल राइट्स को होउची तांकर सेटा बिल ऑफ राइट्स को हैला हमर जोटा फंडामेंटल राइट्स तांकर सेटा बिल ऑफ राइट्स सेटा मु पचाल हैला सो यूएसए रो बिल ऑफ राइट्स inspired the fundamental rights chapter in India हैला यूएसए रो मेटा ने रशिया रु हमें कोन देलु हम प्रिएम्बल लो को कोन प्रिएम्बल ला जो वर्ड अछि justice word we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic democratic republic हैला and to secure among its citizens liberty equality fraternity हैला equality just ये सॉरी कौन तक कौन थी हाँ सॉरी liberty justice liberty equality fraternity हैला so justice रे जो of social economic and political एटा कोठो में नहीं जो वर्ड था justice social economic and political from the USSR constitution से तो रशिया नथिला से तो USSR थे हैला so USSR रो हमें justice नहीं liberty वर्ड ता जोटा अछि तमर liberty of thought expression belief faith and worship हैला जोटा हमर प्रिएम्बल अछि एटा कोठो नहीं छु फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सो तमे एटा देखि परछो केते एग्जांपल्स हमें डिस्कस करले और भी बहुत अछि ऑफ कोर्स ए जो एग्जांपल्स पर हमें डिस्कस करले एटा हमें सब कोन नहीं छु हमें नहीं छु हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट करिछु बट ब्लाइंडली कॉपी करनु सेटा हमर कंट्री को जेमिति जो भाबरे सूट करिवो से हिसाब रे ताको मॉडिफाई कराई कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बनाई हैला सो बुझी परलो ए पार्ट ता आई होप समस्त बुझी परछंती कार यदि क्वेश्चंस अछि प्लीज पचारिवो हैला सो हमें देखिले हमर इंस्पिरेशन is basically from two aspects गोटे है ब्रिटिश आ गोटे है अदर कॉन्स्टिट्यूशंस है ना सो these contribute to the huge size of the तमरो constitution है ना लास्ट जिनसटा कोन देखियो व्हाट इज द रीजन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग लेंथी इट इज द डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स जेतोळे हमरो ड्राफ्ट होतुला कॉन्स्टिट्यूशन सेतोळे ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले डॉक्टर बीआर अम्बेडकर वेरी गुड ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन वाज डॉक्टर बीआर अम्बेडकर हैला chairman and you had other members also अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर हैला लेखि दोज कले एमती किछि मने रखिया दरकार नै अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर ओके एटसेट्रा बहुत लोग थिले और 6 5 6 जण आउ डोंट नीड टू रिमेंबर दैट ओनली ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन मन रखिया हैला सो एमाने सब जेति की मेंबर्स थिले दे वर ऑल लीगल एक्सपर्ट्स समस्त लॉयर्स थिले प्रोफिशिएंट लीगल ल्यूमिनरीज थिले तो नेचुरली तमे देखितो त लॉ बही गुटे खोलिबो कि पढिबो मोटा बहीटे थाए आ बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स थाए टेक्निकल लैंग्वेज थाए जहा पे आउरी लंबा हुए लेंथी तो दिस वाज आल्सो अ फैक्टर इन द एक्सटेंसिव लेंथ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैला बेसिक जिंस बुझी परलो एथरा why our constitution is lengthy तीनटा मेजर जिंस हम देखि देले geographical factors historical factors जो हम ब्रिटिश and other constitution नो inspiration and dominance of legal experts okay we move on to the next point हम एटा ताऊ डिस्कस करिया दरकार नहीं जो वेरियस सोर्सेस वाला केना सही जिंस ही हमें जोटा हमें इंस्पिरेशन नहीं जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन नो सेम जिंस हैला ओके नेक्स्ट बुझिबा
अमेंडेबिलिटी अमेंडेबिलिटी माने कौन तमें जानिच जो जिनस भी आम करू सब एकाथरे एका पार्ट रे करेक्ट न थाए भूल हुए हम तो naturally there could be provisions where the constitution framers जो माने constitution रो गठन करचंती framers of the constitution could be wrong हैला either they could be wrong or there could be situations constitution केबे बनतिला 1949 आज केबे 2026 1949 रु 2026 सोसाइटी कौन सेमिति अछि सोसाइटी डिमांड सेमिति अछि चेंज हुए तमे तळे जाओ बुलिया पे तमे एठी ओडिसा रे अछ एठी गरम बहुत हैला एठी तमे कोन तमे स्वेटर जैकेट एगुड़ा सब पिंदी तो बुलिबन ना तमे कोन करिवो तमे हाफ शर्ट स्लीवलेस जेमती जोटा माने गरम को जेमती आराम से कर परियो किंतु जेतोळे तमे जीवो शिमला तमे हाफ शर्ट पिनी जियो स्कर्ट पिनी जियो नै ना कोन हबो तमे स्वेटर्स आउ हेवी वुलन apparel पिंदी की जीवो ड्रेस पिंदी की जीवो सिमिलरली तमरो जेमिति सिचुएशन डिमांड करे सेही हिसाब रे हमकु निजोको बदलियार अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी गोटे अमेंडेबिलिटी रो प्रोसीजर अछि अमेंडमेंट प्रोसीजर अछि अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा एई जिंसटा को रिकॉग्नाइज करे एई जो सत्यटा कोन कि हमकु हम सिचुएशन हिसाब रे हमकु निजोको बदलिया पड़े तो सिमिलरली ना कॉन्स्टिट्यूशन ना अमेंडमेंट प्रोसीजर ता सेटा को रिकॉग्नाइज करी कि हुए कि फ्रेमर्स माने तो 1949 ने जो जिंसटा बनेइथिले जो प्रोविजंस बड़ा बनेइथिले दैट माइट नीड मॉडिफिकेशंस इन द फ्यूचर हैला तो जेतोड़ तो मॉडिफाई करि परिबो सेतोळे नेचुरली सेतोळे कोन करथिले कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देइथिले तमे तो हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री पढिबो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पढिबो सेतर कोन हैला कश्मीर को हमको इंटीग्रेट करिया पई हमें ताको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करि देलु कि एटलीस्ट कश्मीर टा पार्ट हे जाओ कश्मीर कोन कहला ठीक अछि मु साइन करिबी किंतु तुमको हमको स्पेशल स्टेटस दबा को पड़े सेता सेतबळर सत्य 50 वर्ष हो गलानी तांको पई बजेट रे हमर एलोकेशन रहउची तांको लोको हम इंडिया भीतर आसी कोठी भी बेनिफिट्स पाई परिबे तांको भीतर अलगा कोन सिटीजंस को भीतर किछि डिफरेंस नाही तो व्हाई शुड देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स कालिका डेट रे ओडिसा कहबो ये की कथा तमे ताको वीआईपी ट्रीटमेंट दोछ हमको भी दरकार हमको हमर निजर इंडियन पिनल कोड दरकार बहुत जिंस कहि थांते ताकर सेठी लोको लैंड परचेज कर परिबेनी जदी लोकल हे नथिबो ओडिसा रा काली लोको जदी कहि ताल तो केबे बड़ इंडस्ट्रीज केबे सेटअप ही परिबोनी वेदांत जदी सब अछि से माने एठी सेटअप करछन काई कि कांगे तांक पाखरे इंडिपेंडेंस अछि पैसा जदी देबे दे कैन परचेज लैंड एनी पर्सन तो खाली वेदांत कंपनीज हुए गोटे छोट लोक जदी के गुजरात रो भी अछि से आसी कि जदी कहबो कि मु ओडिसा रो गोटे जगह किनिया पे चाहू किनि पारि बट कश्मीर से अलाउड नथिला तो ए जो वीआईपी ट्रीटमेंट थिला ताकू चेंज कला कि 2019 रे गवर्नमेंट चेंज कर देला सो एटा कोन हैला गोटे मॉडिफिकेशन हैला so this modification is what it is amendment of the constitution so constitution na one important feature is that it allows for its amendment माने constitution recognize करूची कि हां मु भी भूल हेई पारे फ्यूचर रे जदी तमे मते चाहिबो मते अमेंड करि परिबो मते चेंज करि परिबो बट हमर अमेंडमेंट ता इज अमेंडमेंट ता हेई परिबो चेंज तो करि परिबो बट एते इजी की चेंज करिया एते इजी की in some situations yes in some situations no है ना so we follow amendment procedure ta our amendment procedure is a synthesis it is a synthesis of flexibility and very good and rigidity है ना flexibility माने easy to amend करिबा चेंज करिबा easy rigidity माने difficult to amend है ना हमर जदी सबु एमिति 2 सेकंड रे अमेंड हे ताता ताले जुडिशियल रो कुछ काम रही तांते जुडिशियल तो कहतांते कि यार तमे तो सब कर दोछ मोर कोन दका मु तो इंटरप्रेट ही कर परिबी सेहित पई फ्लेक्सिबिलिटी रे कोन आमे तळे पढिबा यूनियन एंड द स्टेट्स यूनियन सॉरी स्टेट्स रो जतळे एरिया चेंज करियार थाए जतळे स्टेट्स रो एरिया अल्टरेशन करा जेमति तमे देखिथिबो 2000 रे कोन हैला एमपी को भांगी की
छत्तीसगढ़ करदेले, बिहार को भांगी झारखंड करदेले, यू उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मोस्ट रिसेंटली 2014 ने तमर कोन हेतले आंध्र प्रदेश वाज सॉरी आंध्र प्रदेश को कार्व करके तेलंगाना बन ओके सो सेतरे कोन तांको पचरा है लागी ना सेही पावर टा का को दिया इच सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट लॉ बनिया काम तो पार्लियामेंट ना तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ स्टेट टू अल्टर अ स्टेट टू डिस्ट्रॉय अ स्टेट जतरा हमें पढिबा यूनियन एंड स्टेट सेतरा देखिया सो एटा कोन होची एटा आ पई कोन दरकार यू नीड अ सिंपल मेजॉरिटी माने 50% प्लस 1 आमे यदि 10टा पिला अछु 6टा पिला यदि वोट कर देले लॉ पास एग्जांपल दो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि माने केते इजीली तमे अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन नाउ रिजिडिटी कोन जोटा डिफिकल्ट टू अमेंड रिजिडिटी रे कोन एग्जांपल देखिया रिजिडिटी रो एग्जांपल देखिबा जितबळे तमे गोटे फेडरल प्रोविजन चेंज करिया पे चाहिबो फंडामेंटल राइट्स हे गला किंबा सम फेडरल प्रोविजन जेमती यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पढैतिली ता भीतर धर को यूनियन कहबो हमकू जो तमे नेइथला एग्रीकल्चर तमे हमू देई दियो हमू दरकार एग्रीकल्चर जो स्टेट कहबो ये की कथा आमे कहि दबु तबु तो एटा कोन एते एतरे यूनियन को सेमिते पावर्स मिलिनी एटा सेहि पई कॉन्स्टिट्यूशन को कहिछि सेंटर राइट्स को भी गोटे जगह सिक्योर करी रखिछि आ गोटे जगह स्टेट्स रो भी राइट्स को सिक्योर करिछि स्टेट्स खाली गोटे मेयर पार्टिसिपेंट्स न होई कि रसत खाली एमती क्लास रे पार्टिसिपेट न करो क्लास रे इंटरेक्ट भी करिया दरकार हैला सो स्टेट्स को जतळे एमितिया प्रोविजन जतळे चेंजेस हबो द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज वेरी डिफिकल्ट तुमको कोन दरकार यू नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी माने ना 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो माने लोकसभा रे आउ राज्यसभा रे जेतिकटा मेंबर्स अछंती तार 2/3 मेंबर्स माने 66% तुमको दरकार लोकसभा रे चलो पास हेई भी गला राज्यसभा रे केमते हेइछो राज्यसभा रे तो पास होवा डिफिकल्ट ना कानी सिटी ऑपोजिशन ना बेसी मेजॉरिटी अछि तुमको 2/3 मेजॉरिटी रे साइन करे अछि ये तो गोटे लोकसभा रे गोटे राज्यसभा रे हैला एटा अच्छा एठी सॉरी नी तापर कोन हबो तमरो जीवो स्टेट्स पकु एटा मु फेडरल प्रोविजंस कथा कहूछ हैला नॉट फॉर फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स पाखु जीवो स्टेट्स रो भी मिनिमम 50% of the states have to approve माने तो भाबो केते डिफिकल्ट आगे तो तमरो 2/3 मेजॉरिटी दरकार लोकसभा रे सेठी पास हैला परे 2/3 मेजॉरिटी दरकार राज्यसभा रे सेठी पास हैला परे स्टेट्स पाखु जीवो सब स्टेट्स हमर 28 टा स्टेट अछि सब स्टेट पाखु जीवो मिनिमम 15 टा स्टेट जतोळे अप्रूव करिवे ता पर जाई कि लॉ पास भाबो केते डिफिकल्ट कोउटी थिला 50% मेजॉरिटी खाली 10 टा पिला अछन 6 टा पिला दे देला सरला कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट एथी भाबो एथी आगे 2/3 मेंबर्स आगे साइन करिया आगे ये अप्रूव करिया दरकार गोटे हाउस रे सेकंड हाउस को बोले भी 2/3 मेंबर्स हाउस अप्रूव करिवे देन 50% स्टेट्स भी अप्रूव करिया दरकार ता पर जाई कि लॉ पास तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर तो बुझी पालो अमेंडेबिलिटी हमें बुझिले केमिति हाउ इट इज इंपोर्टेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस and the amendability that is amendment procedure that is followed in India that is defined by both flexibility it is a synthesis माने बुझछो तो माने mixture it is a mixture of flexibility as well as rigidity बुझी पड़छो तो ने डाउट्स किछि नाही तो ठीक अछि एडा एडा एई जिंस गुडा तमे जे जानि थिबो ना आगर जेतले जो चैप्टर्स गुडा पढिबो बहुत इजी हेइ जिवो एडा बुझिबो एटा हजार थरा हमें आगु को ये रिवाइज करी एटा भाबियोनी गोटे थर पढाई गला माने सरी गला एटा हजार थर ए जिंस रिपीट हबो अलगा क्लासेस रे ए बेसिक जिंस गुडा जानि गले तमरा आ डाउट्स किछि रहइबो नै हैला नेक्स्ट देन हमर नेचर ता कोन वी हैव अ फेडरल सिस्टम दो सम से वी हैव अ क्वासी फेडरल सिस्टम देखियो आगे फेडरल सिस्टम ता कोन फेडरल माने हैला डिवीजन ऑफ पावर्स
between center and states है ना फेडरल माने कोन डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स जोटा मु तुमको कहितली स्टार्टिंग रे आमर कंट्री रो एटा पूरा यूनियन टा हला ता भीतर छोट छोट यूनिट्स भी अच्छा एगुडा सब मिसी की सिना बनिछि हम इंडिया नले यार कोन अस्तित्व किछि अस्तित्व ही नहीं ना एटा गोटे ओडिशा गोटे कंट्री हितांता वेस्ट बंगाल गोटे कंट्री हितांता तेलंगाना गोटे कंट्री हितांता एई सब छोट छोट यूनिट्स मिसी की दे फॉर्म दिस एंटायर यूनियन तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहला कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर्स टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कोन आंक पावर डिफाइन हेची 7th शेड्यूल ले जोटी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ गोटे को लिस्ट अछि गोटे गोटे कॉन्करेंट हला कॉन्करेंट लिस्ट हमर मेंशन हेची यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स मु तुमको देइथिली एग्जांपल डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स करेंसी एटॉमिक एनर्जी हला एगुडा आउरी एग्जांपल्स अछि एगुडा पावर्स कार यूनियन एई सब्जेक्ट्स ऊपर लॉ की बनी परिबो खाली यूनियन बनी हला सिमिलरली स्टेट रो सब्जेक्ट्स कोन लैंड एग्रीकल्चर लॉ एंड ऑर्डर ओके आ ऊपर लॉज की बनी परिबो ओनली द स्टेट कैन मेक लॉज हला कॉन्करेंट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि जेमति एजुकेशन फॉरेस्ट्स आ ऊपर लॉज की बनी परिबे बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स है ना तो हमर ए जो जिंसटा अछि अरेंजमेंट ता दैट इज अ फेडरल अरेंजमेंट जोतरे डिवीजन ऑफ पावर्स हेच सेंटर को भी पावर्स मिलछि स्टेट्स को भी पावर सो वी हैव अ फेडरल पॉलिटी फेडरल सिस्टम हमर बुझबो ना फेडरल सिस्टम बट मेनी पीपल आल्सो कॉल इट क्वासी फेडरल काई ना फेडरल प्रोविजन से ना अछि किंतु यूनियन को टिके बेसी पावर्स मिलछि है ना आवर कॉन्स्टिट्यूशन is a little biased towards the union को टिके बेसी पावर्स मिलछि जेमति एग्जांपल है इमरजेंसी खाली सेंटर माने पार्लियामेंट करि परिबो प्रेसिडेंट खाली प्रोक्लेम करि परिबो स्टेट रे गवर्नर की स्टेट रो करि परिबे ना बुझिबलो सो एटा हैला हमर फेडरल अरेंजमेंट हैला नेक्स्ट बुझि पाला समस्त एटा हां ओके वनारी है ना और एक्सटेंड माने वना निला ना हम एक्सटेंड और करि परिबे कुछ असुविधा नहीं माने तो क्लास ये प्रॉब्लम नहीं तो अच्छा तो ठीक है ओके सर जो आउ 10-15 मिनट से सर जो बुझी परछ तो ठीक है ना ना माने मो एक्सटेंड करियर अछि माने करि पे खत्म एंड कर ठीक अछि ताले हमें नेक्स्ट क्लास रे विल कंटिन्यू with the other features हमें तो फॉर्म पर्यंत जाइछन we'll continue with the next class in the we'll continue with the other features in the next class है ना ठीक है क्लियर तो ओके थैंक यू सो मच थैंक यू